हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द मनी मल्टीप्लायर थियरी। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, पहले वो जान लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो इनटू अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द मॉडल। मनी मल्टीप्लायर एक मल्टीपल अमाउंट है बाय विच द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी चेंजेस व्हेन द सेंट्रल बैंक और द आरबीआई चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ हाई पावर्ड मनी। शॉर्ट रन में एक इकोनॉमी बूम के तरफ प्रोसीड कर सकता है या स्लम्प के तरफ भी प्रोसीड कर सकता है। जब भी एक इकोनॉमी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो या तो अपने फिस्कल पॉलिसी मेजर्स को या अपने मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को यूज करके इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करेगा। जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तब वी बेसिकली रेफर टू द पॉलिसीज बाय विच द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और ये जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है, इसको बेसिकली गवर्नमेंट चेंज करता है बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ हाई पावर्ड मनी। और हाई पावर्ड मनी और टोटल मनी सप्लाई का जो रिलेशन है, यही रिलेशन डिफाइंड होता है यूजिंग द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर के बारे में और डिटेल में जानने से पहले वी नीड टू नो सम फ्यू key concepts. The first one being the currency deposit ratio. What is the meaning of currency deposit ratio? See, basically in any economy, each and every individual has a certain income which he receives in each and every period. Out of this income, हर इंडिविजुअल चाहता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखे इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड और करेंसी होल्डिंग, ताकि इसे वो अपने डे टू डे यूजेज में खर्च कर सके। कोई भी चीज खरीदना हो या किसी को कोई पेमेंट करना हो, तब वो ये जो करेंसी होल्डिंग है इससे पेमेंट कर सकता है या पेमेंट रिसीव कर सकता है। बट वो अपना पूरा इनकम कभी भी करेंसी होल्डिंग के फॉर्म में नहीं रखेगा। As Pigou and Marshall stated in the quantity theory of money, अगर आप पैसे को हाथ में रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंसी होल्डिंग और कैश इन हैंड, उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, उससे आपको कोई इनकम नहीं मिलने वाला। मनी हेल्ड इन हैंड विल नॉट यील्ड एनी काइंड ऑफ रिटर्न व्हाटसोएवर। इसीलिए इंडिविजुअल्स डिपॉजिट देयर मनी विद द कमर्शियल बैंक्स, ताकि they can receive an interest income from that amount that they are depositing with the commercial banks. तो ये जो टोटल करेंसी होल्डिंग है और ये जो टोटल डिपॉजिट है, दोनों का रेशियो ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो है। दिस करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल cu and this is equal to capital C by D, where capital C is the total currency holding of each and every individual and D is the total amount that he or she is depositing with the commercial banks. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। आरबीआई के पास कई पॉलिसी मेजर्स हैं यूजिंग विच आरबीआई कमर्शियल बैंक्स जो टोटल लोन ऑफर कर रहे हैं उसे रेगुलेट कर सकता है। दिस topic that is the different measures that RBI uses for regulation of credit, that will be the topic of discussion for some other day. But आज हमें सिर्फ इतना जानना होगा कि कमर्शियल बैंक्स को आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट दे रिसीव एक सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखना पड़ता है विद द आरबीआई, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर और इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। ये जो रिजर्व वो लोग रखते हैं आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट, दैट इज बेसिकली गिवन बाय द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। सपोज आप एक कमर्शियल बैंक है और आपको 1000 रुपीज का एक डिपॉजिट मिलता है। अगर आरबीआई कहता है कि आपको 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स विथ द आरबीआई, तब आपको आउट ऑफ 1000 रुपीज 200 रुपीज रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स विद द आरबीआई, और बाकी का जो 800 है उससे आप कोई भी लोन ऑफर कर सकते हैं या आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट 200 आपको मैंडेटरीली इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना पड़ेगा। तो ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, ये बेसिकली वही शो करता है कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट यू रिसीव आपको कितना रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स विद द आरबीआई। दिस रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज कॉमनली डिनोटेड बाय स्मॉल re and this is equal to the total reserves that the commercial banks keep by the total deposits that the commercial banks receive. और हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है या जो थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसे हमें मनी मल्टीप्लायर थ्योरी के लिए जानना पड़ेगा, वो है मॉनेटरी बेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, मॉनेटरी बेस इज द हाई पावर्ड मनी, इट इज द सेंट्रल बैंक्स मनी। ये वो क्वांटिटी ऑफ मनी है जो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास रहता है, जिसे सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर सकता है जब मर्जी चाहे। So this monetary base is central bank's money, and this monetary base is commonly denoted by M0, and it basically consists of two components. The first one being the currency that is in circulation in the form of currency notes or in the form of currency coins, and the second component is the total reserves
that the commercial banks keep with the RBI. So C हो गया currency in circulation, and the second component is reserves of the banks with RBI. So this is what M0 is. These three are the basic concepts that we need to know as far as the money multiplier theory is concerned. Now we come to the assumptions of the money multiplier theory. Money multiplier theory has four basic assumptions that we need to keep in mind. The first assumption is the currency deposit ratio is fixed. As I already stated, society में हर एक individual को एक certain amount of income मिल रहा है. Out of this income, each and every individual is keeping a fixed proportion with himself in the form of currency holding, और जो बाकी remaining proportion है, that each and every individual is depositing with the commercial banks in the form of deposits. The second assumption is the reserve deposit ratio is fixed. सोसाइटी में या इकोनॉमी में आरबीआई ने एक फिक्स्ड वैल्यू प्रिस्क्राइब किया है, एंड ईच एंड एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू फॉलो दैट वैल्यू. That means each and every commercial bank has to keep this fixed proportion of the total deposits that it receives in the form of reserves with the RBI. ये हो गया second assumption. The third assumption is that of money supply. In the last video, as I told, we have four different measures of money supply, but in this particular model, just for the sake of simplicity, to make our model simple, we assume that money supply consists of two components. First one is C, that is the currency that is in circulation in the form of notes and coins, and the second one is demand deposits that the individuals keep with the commercial banks. We only consider these two components of money supply because the other components are not relevant as far as the money multiplier theory is concerned. The last assumption is मनी मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो हम निकाल कैसे रहे हैं. वी आर बेसिकली एबल टू फाइंड दैट आउट बिकॉज द आरबीआई इज चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द मॉनेटरी बेस. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption of this model. The RBI is changing the quantity of high powered money, that is M0 or the monetary base. So these are the four assumptions that we need to keep in mind as far as the money multiplier theory is concerned. So now that we know what the assumptions of this particular model are, now we can proceed and build the model, and we can derive the equations that are required. So firstly, what we have assumed is the currency deposit ratio denoted by small cu is equal to capital C by capital D, where the capital C is equal to the currency holding with the public, and this capital D is equal to the demand deposits which the individuals are keeping with the commercial banks. So given C and D, we get the currency deposit ratio as this. Also, we are defining the reserve deposit ratio as capital R by D, where again the capital R is nothing but the reserves that the banks are willing to keep with the RBI. So R is reserves of the commercial banks with the central bank or the RBI. So this is the value of R, and as I already stated, we are defining money supply as C plus D. So we are considering the two components of money supply to be currency in circulation and the demand deposits. As I've already stated, just to make the model simple, we are not considering any other component of money supply whatsoever. Only these two components are relevant here. So this is the money supply, and another thing that we are considering here is the demand for high powered money. Now this is very important. Demand for high powered money basically originates from two components or two sources. First one is the amount of currency that the individuals or the public is willing to hold in the form of cash in hand or currency holding, and the second one is the reserves that banks desire to keep with the RBI or the central bank. So our high powered money's demand can be stated as C plus R, where R is the reserves that the commercial banks are willing to keep with the RBI. Now we will be making some modifications. From this particular equation, Cu equal to C by D, we can say that capital C is equal to small cu into D, and from this particular equation Re equal to R by D, we can say that capital R is equal to small re into D. Next, what we are going to do is we are going to substitute this in this particular equation. Therefore, we get money supply as
small cu into d plus capital D. And if I take D common here, I am getting 1 plus Cu. So from here I can write the total deposits that the commercial banks are receiving as money supply divided by 1 plus Cu, where Cu is the currency deposit ratio. This is one equation. Another thing that we can do is we can substitute this and this values in this particular equation. Therefore, I can write that high powered money's demand is equal to Cu into D plus Re into D. Therefore, from here I can say that high powered money's demand is equal to Cu plus Re into capital D. And further from here we can say that D is equal to Hd by Cu plus Re. Now if we equate these two values of D, what we get is Hd by Cu plus Re is equal to Ms by 1 plus Cu, that is the currency deposit ratio. From here we can write that the money supply in the economy is equal to 1 plus Cu divided by Cu plus Re into Hd, where Hd is simply the demand for high powered money. This is the final equation that links the high powered money's demand with the money supply. Now high powered money's demand was equal to C plus R, but हमने high powered money का supply अभी तक consider किया ही नहीं है. Basically high powered money का जो supply है वो fixed रहता है. It is fixed by the central bank or the RBI. So we assume that HS or the supply of high powered money is equal to H bar. अगर H bar HS का value है at equilibrium, हमें पता है कि high powered money का demand और high powered money का supply both will be equal. So we can write that at equilibrium HS equal to H bar, which in turn will be equal to HD. So what we can do is इस HD के जगह पे हम लोग H bar replace कर सकते हैं. तो हमारा जो final equation है that gets modified as MS equal to 1 plus Cu divided by Cu plus Re into H bar, where H bar is the total quantity of high powered money that is fixed by the central bank or the RBI. So the final equation जो हमें मिला that can be written as Ms equal to 1 plus Cu divided by Cu plus Re into H bar, जहाँ पे H bar हम लोग का total quantity of high powered money that is supplied by the RBI है, MS है aggregate money supply in the economy, Cu है currency deposit ratio और Re है reserve deposit ratio. Now if the central bank changes the quantity of high powered money by delta amount, हमें पता है कि Cu और Re ये दोनों components fixed है क्योंकि ये हम लोगों ने assumption में लिया था. तो if the central bank changes this H bar by delta amount by taking total differential, we can say that delta Ms will be equal to 1 plus Cu by Cu plus Re into delta H bar, where delta H bar is the quantity by which the central bank is changing the total supply of high powered money. वो increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है depending upon the policy that RBI has taken. और since this component is fixed, इसीलिए हमारा इस component में कोई change हो नहीं रहा. So if the central bank changes the quantity of high powered money by delta amount, हमारा money supply changes by delta ms amount, where delta ms is equal to this. From here we can say that delta ms by delta h bar is equal to 1 plus Cu divided by Cu plus Re. यही money multiplier का final form है. Delta ms by delta h bar is equal to 1 plus Cu by Cu plus Re. This is written as small mm, where mm is the money multiplier. So with that we come to an end of the money multiplier theory. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो do subscribe and hit the like button. Thank you.